So hello everyone, hope you are all doing good. तो in this video I am not going to talk about anything UI UX की प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, वायरफ्रेम क्या बनाते हैं और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है. I'll talk about a one topic that I feel as an UI UX designer everyone should need to talk about this and think about this. तो when you start your journey as an UI UX designer, like अगर आप जॉब करते हो तो आपको जो भी क्लाइंट या जो भी आपके ऑफिस में मिलता है वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो. But somewhere you need to actually think about it that in what niche you are going to design. Let's understand through what is available in the market. So एज अ डिज़ाइनर एक आप ऐप भी डिज़ाइन करते हो, एक आप वेबसाइट भी डिज़ाइन करते हो. आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो डिफरेंट डोमेन्स के हैं. आपके पास डेली यूसेज लाइक टू डू लिस्ट हो गया, कैलेंडर हो गया, गूगल टास्क हो गए, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके डेली के काम के लिए आते हैं. फिर एक एडटेक ऐप्स आते हैं जिसमें एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है जो बेसिकली सिर्फ एजुकेशन के लिए होती हैं. आपके पेमेंट्स और बैंकिंग ऐप्स आते हैं, आपके पास स्टॉक मार्केट के ऐप्स आते हैं, हेल्थ के ऐप्स हैं, गेमिंग ऐप्स हैं, ई बुक्स है, कैलकुलेटर हैं, स्टोरेज हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और गवर्नमेंट के बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं. तो देखा जाए तो गेमिंग ऐप एंड हेल्थ ऐप इज़ नॉट द सेम थिंग. गेमिंग ऐप इज गेम्स के रिगार्डिंग है और उसमें एक पर्सन जो गेम खेल रहा है तो उसकी साइकोलॉजी यूज़ करी जाती है. जब एक हेल्थ ऐप की बात आती है वहाँ पे एक पर्सन के हेल्थ को ध्यान दिया जाता है. कैलोरीज हो गया, फिजिकल वर्कआउट हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, और जिस भी कंपनी ने या फिर जिस भी क्लाइंट है आपका उसके क्या बिजनेस पर्सपेक्टिव है, उसका क्या विजन है उस एप्लीकेशन को लेके, वो सारे कंसीडर होते हैं. अब मान लो एक आपसे बोलता हूँ मैं आज की आप एक हेल्थ ऐप डिज़ाइन करो. फॉर एग्जाम्पल यू आर समवन जो वर्कआउट नहीं करते, जिनको हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता, न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं पता, और उनको मैंने एक काम दिया डिज़ाइन करने का. दे हैव टू पुट मोर एफर्ट्स टू डिजाइन दैट हेल्थ एप्लीकेशन बिकॉज उनको फिर उस डोमेन के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. दे हैव टू आस्क द क्लाइंट 100,000 ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एप्लीकेशन. सेम अगर एक कोई कस्टमर मैनेजमेंट आता है या फिर कोई मैनेजमेंट एप्लीकेशन लाइक टेक्स पेमेंट वाला ऐप हो गया फॉर समवन जिसको बैंक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, उसको शायद ये नहीं समझ में आएगा कि क्या है, क्या बनानी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड दैट पर्सन हैज़ टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट. सेम विद द स्टॉक मार्केट कि किसी ने कभी आज तक स्टॉक मार्केट में कुछ सुना ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं है, एंड दे हैव नो नॉलेज अबाउट कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है. दे हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट. उन्हें हर जगह पढ़ना पड़ेगा, उन्हें अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, एंड देन दे विल बी एबल टू डिजाइन एन एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम थिंग कि इफ यू चूज अ पर्टिकुलर नीश, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यू आर गोइंग टू क्रिएट ऑल द मनी और फाइनेंस ऐप्स. और फाइनेंस में अभी आपका पेमेंट का भी ऐप आ जाता है, बैंकिंग ऐप्स आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट्स के एप्लीकेशंस आ जाते हैं. एक आपने देखा होगा इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट IND मनी जो हर चीज़ को मैनेज करता है कि आपने कितना टैक्स पे किया है, आपने किस स्टॉक ब्रोकर से आपने कनेक्ट किया है, वो सारा आपको एक जगह पे शो कर देता है. आपके म्यूचुअल फंड्स का क्या है, आपका टारगेट क्या है नेक्स्ट, और कितना वेल्थ आप मैनेज करना चाहते हो. तो दैट एप्लीकेशन मेंटेन्स एवरीथिंग. तो इफ़ यू टेक पर्टिकुलर वन नीश की आई एम गोइंग टू डिज़ाइन ओनली applications in this domain or in this field, so that will help you to do your work more effortlessly. Now why? See, I know that we have to be open to all the application and all type of work. You must have heard about कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों पे जब फोकस करने लग जाते हैं, फिर बहुत चीज़ों में पैर रखते हैं तो हम फिर कहीं ये नहीं रह जाते हैं. तो अगर हम एक चूज भी कर लेते हैं that would be good. If you feel कि one is not enough, तो भी 2-3 डोमेन्स आपने पकड़ लिए. Now how you are going to know about these कि इस चीज़ में काम कैसे होता है. Let's say कि you have picked up this stock वाला फील्ड. अब आप थोड़ा सा स्टार्ट करोगे, वेबसाइट जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन पे पढ़ना, जो एप्लीकेशंस बनी हैं उनको देखना स्टार्ट करोगे. व्हेनेवर अ डिजाइनर यूज्ड टू पिक अप एनी वर्क एंड दे गेट टू डिजाइन, दे टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर एप्लीकेशंस. वो कैसे होता है वो मैं भी आपको बता दूंगा. लाइक बिफोर यू डिजाइन वन मूड बोर्ड. विल गेट टू नो अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. हाउ यू आर गोइंग टू नो अबाउट दिस कि दिस इज द फील्ड आई शुड पिक इट अप. इन द इनिशियल स्टेज यू कैन पिक एनी फील्ड. लाइक आपको जो काम मिला उसको करो, डू 1, 2, 3 प्रोजेक्ट्स. फिर उसमें देखो कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें आपको अच्छा लगा. व्हाट वाज द डोमेन और द फील्ड दैट यू रियली लाइक्ड अबाउट, एंड आपने उसे खुद से एफर्ट किए थे उस चीज़ को पढ़ने में. और वंस यू गेट गुड इनटू दैट, पिक द क्लाइंट्स ऑफ दैट डोमेन ओनली. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. और you can also, like as I said, whenever you are free, just explore all the applications, all the websites that are available. Like it doesn't take much time, right?
you just scroll on the Instagram or YouTube. In that time only you can also scroll on the Play Store applications or App Store, like Apple App Store, and there you can look into the different apps that are available, right? Or how they have designed it. You can also look for how the design can be improved. Like for example, when I use any applications, I rarely use it for some usage. I just look into applications just to know, like, see how that application is working. Was the something that I can pick it up that this is not something good, or how and this page can be improved. I think I have also told about you Make My Trip, when my experience with that application was like, I felt at one page it has a lot of content, like it would be very difficult for a new user to use that application. So once you start doing it, right, you make that into a practice or a habit of your daily life, automatically you will start thinking like an UX designer. You will get your answer, like what is the one thing that I'm really interested in. So if you ask me like what is your interest, so I have a lot of interest in stock market applications, basically the financial applications, and this health one, because I am very much into the fitness and I really like to be like very fit. I don't want to get old. So I'm very much interested in health applications, and this is finances app, maybe the banking apps or the stock market apps, or anything related with the finances. So I try to read about them, but this is not something that this is only in trend right now. So what happens, like there's nothing, no application or anything which is in trending. This application is basically idea of someone who wants to like maybe earn money or do a startup. So you are going to work on someone's new idea. So if you are getting some opportunity, we are going to get into a new domain. It would be challenging, but if you can pick it up. Or if you feel no, I want to stick to my domain, so stick to your domain. And as I said, like in UX design, you can work in two ways. Either you are doing a job or you are doing a freelancing. In freelancing, I feel still it's difficult because not everybody have a idea to get into entrepreneurship or do a startup where they like you are starting with the new application. So I feel this is very rare to get. Like there's a few, I would not say few, but maybe available, not sure. But when you are working in a job, so what happens, like after sometimes the design changes, like when there's some trend in market, or there's some changes that the client requires, or there's some new functionality added in the application. The design keeps updating, right? They keeps updating their design, but there you get a lot of chances or opportunity to work on designing part. But yes, in designing you can do a lot of things, right? You can also decide in a two-way that I'm going to design app. Now in app also there's two fields, like iOS applications or Android applications. So you have the designing of both the things are different, because the font that iOS application use and the font that Android applications use is two different things. So if you're going to Android applications, you need to know about what text they are using, what color psychology they are using. If you're going to the iOS applications, then also you have to read about what's the font or what's the typography, color psychology they are using. So first decide you are going to design the applications or the websites. Second, if you are choosing application, which applications, iOS or Android? And it's very not necessary, like you have to decide right now. You can take your time, you can also work on the project and then decide. So this is just an insight in the UI UX, nothing more to like you have to do actually right now, but you can start thinking in this way as well for the UX. I felt that this is also important part in your journey of UX design that we should actually consider. So I just thought to share my opinions in this. So I will end up this video, and I hope you are practicing your previous chapters or previous steps that I have told you. So till then, bye bye, take care and keep smiling.